Hello everyone, welcome you to another live session of 5 Pesa live webinar. I'm Indu Chaudhary. Today we are going to discuss a very interesting and important topic. Is this the right time to invest in equity? ये सवाल हम सबके दिमाग में आता है. कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि हमें क्या स्टॉक मार्केट में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. किसी एक सेक्टर के बारे में हम सोचते रहते हैं कि क्या ये सही समय है अब यहाँ पैसा लगाने का, निवेश शुरू करने का या नहीं? तो ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता ही रहता है हमेशा। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए एंड लेट्स फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त। एंड फॉर दैट आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट कनेक्ट हुए हैं, Mr. Amit Grover from DSP Mutual Fund. He's a part of financial services from last 15 years. Amit के हम प्रोफाइल को देखें तो he has started his career with Standard Chartered Bank, then he worked with HSBC, Sundaram Mutual Fund, IDFC, and now Amit is heading learning and development at DSP Mutual Fund. तो अमित बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 पैसा Thank यूट्यूब you, चैनल Indu. में. Thank you, Induji. Indu, is my voice audible and is the presentation visible? Yes. Perfect. Good evening, everyone. A very interesting topic. Is it a good time to invest in stock market? I think a $1 million question है, not just for us, but across the world, all equity investors यही सोच रहे हैं कि equity के लिए ये सही time है कि नहीं. And we listen mixed opinions. Some people are saying इससे अच्छा time नहीं मिलेगा, and there are some people who are also saying कि market bubble में आ गई है because economy कहीं पे है और stock market कहीं पे और जा रही है. This is somebody which everybody is saying that कि how is that the economy is going in doldrums but stock market is only going up? How is it this possible? Why is this big disconnect? So we'll try to answer everything in next half an hour, and the last 15-20 minutes मैं कोशिश करूंगा जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं. Before going into the main point कि is it a good time to invest or are we in a bubble, let me introduce equity in a very simple terms. Because कभी-कभी क्या होता है, हम जब मार्केट को रोज देखते हैं, माइक्रोस्कोप की तरह रोज देखते हैं, हर मिनट देखते हैं, हर घंटे देखते हैं, हम भूल जाते हैं इक्विटी का मतलब होता क्या है. Let me just revise it. I'm sure आपने ये डेफिनेशन 1000 बार सुनी होगी, बट एक बार और सुनोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. What is equity? Equity in simple terms means investing into businesses. और ये businesses कौन से होते हैं? ये सारे businesses वो business हैं जो हम रोज we use them on a daily basis. When I look at the wall, I can see Asian Paints or a Nerolac. जब मैं सीमेंट देखता हूं, I can see ACC or a Ultratech cement. When I get up in the morning, I brush my teeth, I see Hindustan Liver or a Pepsodent or a Colgate. जब मैं आटा खाता हूं, I can see ITC over there. When I go for shopping and I take my car, I see Maruti or Mahindra or Tata Motors. When I look inside the car, I can see all auto ancillary companies. I look at the tire, I can see MRF or Balkrishna Industries or Apollo. I go to shopping, I see DMart or a Shopper Stop. Everything in DMart is listed company. Today, I am very much worried about my health. I can still see pharma companies over here, a Sun Pharma, or a Lupin, or a Ipca Laboratories, or a Cipla. Right now, I'm doing a session on a technology. I can see Bharti Airtel over here. On the top, you can see oil and gas, Reliance Industries, or a BPCL, or a ONGC. When I go for banks, doing my basic banking activity, I can see a HDFC, ICICI, Kotak, or a SBI. What I'm talking about basically, what is equity? Equity means investing into businesses, and businesses create wealth from a long-term perspective. ये दुनिया में आप कहीं भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म में डालोगे पैसा, आपका पैसा बन जाएगा. But the point is simple. Not all businesses make money, and that's why diversification is very important and the key to creating wealth. इतना सिंपल सी बात है, but unfortunately we love to complicate it. Just let me give you a little bit more about history about stock market. Sensex, which is nothing but the top 30 companies of the country, started somewhere in 1997, 1980. It started with the index of 100. आज जब हम बात कर रहे हैं 52,000 लेवल पे आ गया है. That means a simple maths. If you would have invested 1 lakh rupee 41 years back, आज उसकी कीमत 5.2 crores हो चुकी होती. 1 lakh has become 5.2 crores.
That's the power of equity and equity mutual fund to create wealth from a long term perspective. इसमें आपको कुछ नहीं करना था. जब जब हम आज बात करते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, इसमें आपको कुछ काम करना ही नहीं था. All you had to do was invest into businesses, and businesses created wealth for you. But the unfortunate part is when we talk about returns of equity and we talk about 12, 13, 14% return, whatever returns which equity has given, unfortunately, people thinks that the journey of equity market was a straight line. Honestly, like life, the journey of equity market is never a straight line. कभी अच्छा वक्त आता है, कभी खराब वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है, कभी कभी तो ऐसा फील होता है that you have gone behind in life by 4-5 years, and कभी कभी equity market doubles in just 1 year. That's the nature of equity market, not just in India but across the world. That's the reality of equity market. Unfortunately, people assume it to be a straight line. Now let me just ask a very fundamental question. The biggest problem for investors is that the reason why markets give returns but उनका पैसा नहीं बनता, इसमें emotions और behavior आ जाते हैं. And let me talk about certain things which people are not able to understand about equity. I'll first finish them and then I'll answer the most important questions. Are we in a bubble or is it a good time to invest? First important thing, that returns of equity market is not free. When you get high returns of equity market, you have to pay a price for it. This is a chart which shows हर साल what percentage does market corrects every year. ये लास्ट 30 साल का डेटा है. ये आपको ये दिखाता है सिंपल पॉइंट से कि what percentage does market correct every year. Example, पिछला साल 2020, from the highest point which was Sensex was at 42,000 level, it corrected by almost 36%. It went to 26,000 level. 36% का fall देखा. But if you look at history, आपको realize होगा in all 30 years 10% fall in equity market was very normal. 90, 91, 92, all 30 years 10% market correction was very normal. 20% fall happened 1/3 of the time. Look at years like 1990, 91, 92, 95, 96, 98, 2000, 2001, 2004, 2006, 2008, 2011. You see many years 1/3 of the time market 20% गिरती ही गिरती है. Or still you might find many instances where market even corrects by 30% in a given year. Just as example, 1990, 91, 92, 95, 96, 98, 2000, 2001. Even जो bull market थी ना 2003 से लेके 2006, उसमें भी हमने मार्केट 2 बार 30% गिरते हुए देखी, 2004, 2006. This is the nature of equity market. The problem is with most of the investors is that they want high returns of equity market, but they don't want to pay the price, which is volatility. If you can pay the price and stay invested from a long-term perspective, you will definitely create wealth from a long-term perspective. This is the first fact which you have to understand. Second fact which you have to understand is that there are periods of amazing returns in equity market, and then there are periods of low returns in equity market. Okay, जब periods of high returns होते हैं, I'll just give you a simple example of history. Jan 2003 to Jan 2008, for 5 years, Nifty gave approximately 43.7% CAGR. अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, ये 5 सालों में वो वैल्यू हो जाती 6.12 lakh rupees. During bull market or good time, everybody starts believing that they have got special gifts, they are God's gift to mankind and they know how to make money. एक प्यादा भी अपने आप को राजा समझना शुरू कर देता है. This is the problem with bull market, and people get overconfident and put a lot of money into equity market, which is wrong. Stick to your asset allocation. Similarly, 2008 से लेके 2014, 6 साल equity market रिटर्न नहीं बनाया. It can get very depressing for people, and we all know, we all are very impatient. 6 साल छोड़ो, 6 महीना का रिटर्न नहीं बनता, we get impatient and we start removing money from equity market. So also understand second point, in the long-term equity journey, you have good times and you have boring times. Now, I'll tell you the third mistake what generally people do. This is called as herd mentality. We love to follow what others are doing. Whatever others are doing, we just jump into it. It's called herd mentality. And that's where the mistake happens. We forget our financial planning. We forget our asset allocation of equity and fixed income. And we try to copy others. If you are able to absorb volatility in equity market, if you are able to understand that equity market has good times and boring times and bad times, and also if you are not able to follow the herd, I'm very sure
you will create wealth from a long-term perspective. Now we come to $1 million question. Is it a good time to be in equity? Is it time to be overweight equity, underweight equity, or neutral equity? To explain this in a very simple example, my favorite player is Mahendra Singh Dhoni, and Mahendra Singh Dhoni knows when to hit which shot at what time. ये छक्का मारने का टाइम है, चौका मारने का टाइम है, या डिफेंस करने का टाइम है? Is it a time to be conservative on equity, overweight on equity, or neutral on equity? To explain this, let me explain you what is happening in the market so that you are able to understand things in a logical fashion. First of all, let's try to understand what drives equity, because जब तक वो ड्राइवर नहीं समझेगा इक्विटी मार्केट का, you will not be able to answer this question. What drives equity? In the long term, लंबे दौर पे what drives equity is nothing but profits, earnings. As long as companies' earnings are growing from a long-term perspective, equity market will grow. That's from a long-term perspective, and that's the holy grail. ये long-term से ये बनता है. But from a medium-term perspective, what drives market is basically liquidity. और जब मैं liquidity का कहने का मतलब बोलता हूं, there are two aspects of liquidity. Interest rates. कितने interest rates हैं market में? If interest rates are low, liquidity is high. And what is the quantity of money which is there in the system? अगर बहुत पैसा प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब लिक्विडिटी ज्यादा है, और अगर इंटरेस्ट रेट लो है, इसका मतलब लिक्विडिटी ज्यादा है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लास्ट 40 सालों में क्या हुआ है इंटरेस्ट रेट्स को लेके. वर्ल्ड की सबसे 3 बड़ी इकोनॉमीज जो आती हैं, फर्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स, ऑब्वियसली सेकंड इज चाइना, बट लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम यूरोप पर्सपेक्टिव. सबसे बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड इज ईसीबी, थर्ड इज जापान. If you look at the trend of interest rates in the last 40 years, the interest rates in the world are only coming down. And as we speak right now, majority of the bonds or interest rates in the world are at their historical lows. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में interest rates कम है. Even if you look at RBI and our interest rates, we are at 4% interest rate. Repo rate इसको कहते हैं. We are at 4% interest rate. If you look at the history of last 20 years, we have never been at so low interest rates. So from a liquidity perspective, yes, it's a very, very favorable thing from a medium-term perspective. This is just a small snapshot of all developed countries and emerging markets across the world. All developed countries either are at 0% or negative interest rates. Even emerging markets, India, China, Mexico, Russia, Indonesia, South Africa, they are at their possible lowest interest rates. So basically at low interest rates and a strong amount of money printing. अगर आप ये चार्ट देखोगे, 2020 में मार्च के महीने में, इनफैक्ट मार्च अप्रैल में, द अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटेड बाय फेड वाज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इट हैज प्रिंटेड इन लास्ट 100 इयर्स. इन्होंने इतना पैसा सिर्फ 2 महीने में प्रिंट कर दिया टू सेव द इकोनॉमी, टू सेव द एंटायर इकोसिस्टम. सो व्हेन देयर इज सो मच लिक्विडिटी, इट ऑब्वियसली गोज इनटू रिस्की एसेट्स व्हिच इज predominantly equity. Why markets are driven right now predominantly is because of too much of good liquidity from printing of money and low interest rates. Another very interesting point, markets are always forward looking. And what do I mean by forward looking? And please try to understand this. We sometimes look at things from a microscope perspective. हम microscope से आज का scenario देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर today the scenario is bad, the market should also be bad. But markets जो है ना, वो telescope लेके बैठती है, and it's always forward looking. Just let me explain you what I'm trying to say. Just recollect March 2020. What happened when the news of the virus started coming in? People started realizing across the world that this virus can be a global pandemic, जिसके वजह से the global supply chain can get disrupted. Because of this, a lot of businesses can get bankrupt, a lot of NPAs can get formed, and because of this, a lot of economies can go into deep trouble. Markets were forward looking. Even before the lockdown took place, हमारा लॉकडाउन आई थिंक 24 या 25 मार्च को शुरू हुआ था. Even before the lockdown took place, Indian stock market had corrected by almost 36%. And not just our markets, the US markets, the global markets, the world market had already corrected. Even before the earnings started coming down. Why it started happening? Because markets are forward looking. They had already discounted all the challenges which will possibly take place because of the global pandemic and the lockdown which will take place. But then what happened post that? The economies, the central bankers, which is nothing but like India is RBI, the central banker in US is Fed, in Europe it's ECB, in Japan it's Bank of Japan. They took
very synchronized fast action of reducing interest rate at a very fast speed. पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट बहुत फास्ट कम कर दिए गए, and at the same time a lot of money printing happened, and at the same time this is a very interesting chart. Look at the fiscal support. Fiscal का meaning होता है the difference between governments borrowing and spending. All governments across the world, especially developed countries, had given a very strong fiscal deficit, fiscal push, जिसके वजह से इकोनॉमी को बहुत अच्छा फर्क पड़ता है from a long term perspective, from a medium term perspective, and markets started discounting this information कि ये नई information मिली है, interest rates are low, lot of money printing and lot of support to the economy by fiscal deficit. Markets started discounting new information and they started moving up. And that's why, and at the same time, there was also a good hope that we will have a vaccine after 1 year, because the world was synchronized to find a vaccine. All the medical facilities were coming together to find a vaccine. And as hope started increasing, markets started going up. And as we speak right now, today, if you look at markets from a valuation perspective, it is very interesting. If you look at price to earning of Nifty, it is very high. It is around 30 plus. If you look at price to book, it is above its average of its historical price to book. If you look at market cap to GDP, it's around 105, 106. At its peak in 2008, it was 140. As we speak right now, it's around 108, 109 or 110. Okay, this is what market cap to GDP is. So if you look from a valuation perspective, from a PE perspective, from a price to book perspective, and market cap to GDP, it definitely makes you believe that markets are not cheap. Okay, they're not expensive at least, but they're not cheap. But now let's try to understand and decode something which is called as earning cycle. And then I'll help you with a framework to figure out whether markets are cheap, expensive, or fairly valued. What is earning cycle? जब मैं कंपनी की प्रॉफिट की बात करता हूं ना, ये कुछ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता कि कंपनी की प्रॉफिट हर साल 1% से बढ़ रही है. Everything in life moves in cycles. Even companies' corporate profit moves in cycles. There are sometimes when earnings are very strong, and there are some times when the earnings are very weak. So you have to understand the earning cycle to understand what happens to the market going forward. Let's try to understand the earning cycle of Indian stock market or Indian corporate India of last 17, 18 years. I have data from 2003 onwards. So basically from 2003 to 2014, if you look at the earning growth, अगर आप 2003 में देखोगे, हमारा earning EPS growth of Nifty was around 80. In 2014, it was around 400. So basically 80 EPS growth 400 में चला गया, which is approximately 5 times. Just in a matter of almost 11, 12 years, your EPS growth almost moved up by 8 times. This is how strong earning growth was happening in this part of the cycle. But if you look at the last part of the cycle, which is last 7 years, 2014 से लेके 2020, 2021 तक, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 6 साल अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखोगी कॉर्पोरेट इंडिया की, इट हैज प्रैक्टिकली बीन वेरी फ्लैट. मतलब 6 साल में कॉर्पोरेट इंडिया ने 0% अर्निंग ग्रोथ बनाई है. अब आप पूछोगे ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? कभी कभी आपकी अर्निंग ग्रोथ इतनी फास्ट ग्रो होती है और पिछले 6 साल से अर्निंग ग्रोथ नहीं हो रही है. व्हाई इज दैट अर्निंग्स हैव साइकिल? टू एक्सप्लेन दिस, आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू हाउ अ सिंपल बिजनेस ऑफ अ थिएटर वर्क्स. इससे आपको इकोनॉमिक साइकिल समझ आ जाएगा. लेट्स से आपका एक छोटा सा थिएटर है और वो थिएटर हाउसफुल जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है. व्हाट यू विल डू इज यू विल से वाओ, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, मैं टिकट्स भी अच्छे कॉस्ट पे बेच रहा हूं, माय थिएटर इज एट फुल कैपेसिटी, लेट मी ग्रो माय बिजनेस. यू गो टू एन HDFC बैंक, you borrow money from HDFC and you open 2 theaters. HDFC is also making a lot of profit because they're lending it to a good company. Even you are making a lot of profit now. Now you have taken a financial leverage. अभी आपके 2 थिएटर हैं, टिकट्स अभी भी अच्छी बेच रहे हो, फुल कैपेसिटी पे हो रहा है. अभी आपको लगता है कि 2 थिएटर तो हो गए हैं, अब मैं एक और थिएटर ओपन करता हूं. मैं SBI के पास जाता हूं, कोटक के पास जाता हूं, ICICI के पास जाता हूं. I'll open 2 theaters and 3 theaters. Now your earnings are moving very fast because of financial leverage. You are borrowing a lot of money, opening 4, 5 theaters. You are hiring a lot of people. जब आप हायर कर रहे हो, इकोनॉमी पूरी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, थिएटर अच्छे चल रहे हैं और आप मार्केट से पैसा बहुत बोरो कर रहे हो. अभी जब क्या होता है, व्हेन द इकोनॉमी गेट्स ओवरहीटेड, आपको थॉट आता है कि मुझे ना पूरे बॉम्बे में अच्छे थिएटर ओपन करने हैं, और मे बी आई वांट टू ओपन लॉट ऑफ थिएटर्स इन गुजरात और दिल्ली. यू स्टार्ट बोरोइंग वेरी एग्रेसिवली. आप बहुत ज्यादा बोरो करने शुरू कर देते हो
and that's where your financial leverage increases a lot. At the same time, banks till now are making a lot of profits because they were lending a lot of money. But now even banks get greedy. They also want to make a lot of profit and they also start lending a lot. This is where misallocation of capital starts happening. कि आप सबको lend कर रहे हो और borrowers बहुत ज़्यादा borrow कर रहे हैं. Economy gets overheated, but the earnings are doing very fine. So the earnings are predominantly increasing because of financial leverage. This is what we saw from 2008 to 2012-13. A good amount of earning growth was taking place, a good amount of growth, a good amount of corporate profitability, a good amount of capacity utilization. Capacity utilization का मतलब होता है कि आपका थिएटर किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है. फुल कैपेसिटी भी यूटिलाइज हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है और आप बोरो बहुत कर रहे हो. लास्ट 6-7 सालों से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ अ स्लो डाउन, नॉट जस्ट इंडियन स्लो डाउन बट अ ग्लोबल स्लो डाउन, द प्रॉफिट मार्जिन्स वर लो. The theaters were moving at low capacity, so there was an operating leverage. And third, deleveraging हो रहा था. बहुत सारे theaters actually बंद हो रहे थे, banks के बहुत सारे NPA form हो रहे थे. The corporates were not able to make profits. This was called a deleveraging cycle because in slowdown, a lot of NPAs get formed, banks have losses, corporates also start closing all the businesses which are not doing well. They start also removing employees, start cutting on expenses. So उस टाइम पे क्या होता है, आपकी अर्निंग्स फ्लैट हो जाती हैं. एज वी स्पीक राइट नाउ, अगर आप 7 साल का कॉर्पोरेट अर्निंग देखोगे, वी हैव बीन इन वेरी लो, प्रैक्टिकली जीरो कॉर्पोरेट अर्निंग प्रॉफिट. ओके, सो वी आर एट प्रैक्टिकली बॉटम ऑफ द अर्निंग साइकिल. सो इससे उम्मीद ये बनती है कि आने वाले वक्तों में, होपफुली मे बी 1 साल या 1.5 साल में, हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो होगी. Now let me connect the dots for you so that अभी आपको समझ आए हम लोग किस साइकिल में हैं और किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर मैं प्राइस टू अर्निंग को देखता हूं या प्राइस टू बुक को देखता हूं, आई फील मार्केट्स आर स्लाइटली एक्सपेंसिव. बट व्हेन आई लुक एट द अर्निंग साइकिल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मार्केट मूव्स ऑन अर्निंग्स, मैं जब अर्निंग साइकिल को देखता हूं, आई रियलाइज आई एम एट द बॉटम ऑफ द अर्निंग साइकिल, सो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. So basically, slightly higher valuation, but bottom of the earning cycle, my allocation to equity should be moderate. Now, when should I be worried about equity market? When I'm at the top of the earning cycle. जब मेरी कंपनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत टॉप पे चल रही हैं, बहुत ज्यादा चल रही हैं, प्लस वैल्यूएशन भी बहुत हाई चल रही है, that's when I have to get very worried because मुझे लग रहा है कि यहां से ना वैल्यूएशन बढ़ेगी और अर्निंग्स भी टॉप पे आ गई हैं, बिकॉज आने वाले वक्तों में अर्निंग्स विल आल्सो कम डाउन. That's when ideally I should be worried. Today, I'm slightly worried because of valuation going up. But when I look at the earning cycle, I know it's at the bottom of the earning cycle. That's why my view on equity markets right now is moderate. When should I be completely overweight on equity? Which is basically nothing but March 2020. उस टाइम पे अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे, निफ्टी का was equal to the same price to book जो जनवरी जो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब मार्केट गिरी थी, जो लोएस्ट प्राइस टू बुक था, वी गॉट द सेम प्राइस टू बुक in March 2020 when market had corrected, and the price to earning ratio of Nifty was around 16. So actually देखा जाए, that was actually the best time to invest because आपकी valuation भी बहुत low थी and you were also at the bottom of the earning cycle. During such times, it makes sense to be overweight equity. Right now, the sense is to be moderate equity because technically, if valuation is slightly high, you are at the bottom of the earning cycle. This is a very interesting framework for you to understand when to be moderate in equity, when to be overweight in equity, and when to be neutral equity. So today, if I am an investor, if I have to manage my own wealth, which obviously like जैसे आप अपना पैसा मैनेज करते हो, मैं भी अपना पैसा मैनेज करता हूँ, I am moderate on equity. Neither I am underweight, neither I am overweight. My asset allocation typically has 60% equity, which is my moderate allocation, 30% debt and 10% into gold. When I believe markets are undervalued, मैं शायद equity थोड़ा बढ़ा लूंगा, and when I believe markets are expensive, I'll reduce my equity allocation. And this is how typically I use my framework to help in terms of managing your entire portfolio. I hope you got the answers, and I'm sure a lot of question and answers will come. तब मैं आपको और समझाऊंगा in terms of how things happen. I'll just talk about 2 ideas, okay, and just to explain you how wealth gets created from a long-term perspective. हमारा एक बहुत interesting mutual fund है. When I talk about equity, if you understand stocks, by all measures, buy direct stocks, but also leave it to professionals because they know how to manage their money. Their core job is to manage money. We have a very interesting fund called as DSP Flexi Cap Fund. मुझे अगर आप पूछो कि एक ही फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं बोलूंगा DSP Flexi Cap Fund.
What is flexi cap? इसमें large cap भी है, mid cap भी है, small cap भी है. This fund has a 24 years of history. इसे 24 years में 19.4% CAGR दिया है, when the benchmark has given approximately 14.6, a 4.8% outperformance. मतलब 4.8% का आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि 24 सालों में ये फंड 70 टाइम्स बढ़ा है, जबकि बेंचमार्क सिर्फ 26 गुना बढ़ा है. द डिफरेंस इज बेसिकली द आउट परफॉर्मेंस द फंड हैज गिवन ओवर 24 years. Second idea, which I would also recommend from a mutual fund perspective, is very simple. I'm sure you have all heard about the story of Gullivers and Lilliput. Lilliput का मतलब जो होता है कि वो बहुत छोटे होते हैं, और गुलिवर्स जो बहुत बड़ा होता है. अगर मैं आपको बोलूं कि हाउ बिग इज इंडियन मार्केट, यू विल से इंडियन मार्केट्स आर वेरी बिग. रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, ICICI, TCS, कोटक, दे आर द बिग्स ऑफ द वर्ल्ड. बट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, यूएस की जो बिगेस्ट मार्केट है, बिगेस्ट स्टॉक है, विच इज कॉल्ड एप्पल. एप्पल्स complete market cap is around $2.1 trillion. India's entire market cap of all the companies put together is only $3 trillion. Apple itself is approximately greater than 2/3 of the entire Indian stock market. There is a world outside India. India just is approximately less than 3% of the entire world stock market. तो आप सारा पैसा अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आप 97% ऑफ द मार्केट को आइडली इग्नोर कर रहे हो. इफ यू वांट टू मैनेज रिस्क, थोड़ा सा पैसा यूएस मार्केट में भी डालना लॉजिकल होता है, एंड पुटिंग इट थ्रू अ यूएस बेस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड विल मेक ग्रेट सेंस. और ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाए हैं, ये हम सारे प्रोडक्ट्स दिन में एटलीस्ट 10 बार यूज करते हैं. एप्पल, व्हाट्सएप, Amazon, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स एंड वीजा. Just to give you an example of the power of how US markets also gives returns along with Indian equity market, we have a DSP US Flexible Equity Fund. ये 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी. As we speak right now, almost 8-9 साल इस फंड को हो गए हैं. It is given a 16.7% CAGR in this entire journey. So yes, you can also have a SIP, STP, or a lump sum from a long-term perspective in a US Flexible Equity Fund. It helps you manage risk in a better fashion. With this, I will end the session, and I'm happy to answer all the questions that you have on equity markets. Thank you. Indu, we can open the floor for questions. Yeah, sure, Amit. अमित, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इस पूरे कॉन्सेप्ट को, एंड आई एम श्योर कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये पूरा कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग का, किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड एसेट एलोकेशन किस तरह से करना चाहिए, ये सबको समझ में आया होगा. देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो जो हमसे व्यूअर्स पूछ रहे हैं. एक डेविड का सवाल है हमारे व्यूअर का, वो सवाल मैं ले लेना चाहती हूँ कि अभी लाइक वी आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक और वैक्सीनेशन प्रोसेस भी चल रहा है. इस पूरे प्रक्रिया को, वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरा होने के बाद अगर हम देखें तो बेसिकली पैंडेमिक अगर ओवरकम कर जाते हैं इस पैंडेमिक से, उसके बाद आपको मार्केट की सिचुएशन कैसी लगती है? सेंसेक्स एंड निफ्टी, आप किस तरह से मार्केट को किस दिशा में जाते हुए देख सकते हैं? Indu, it's human nature, and I'll explain it through a little philosophy. This is a story which I was talking to my son, the Akbar Birbal story, and I'll give you a philosophy from that. So Akbar is asking Birbal, tell me something what human beings believe, which human beings forget during bad times, and they also forget in good times. So Birbal says something very simple and interesting. बुरे टाइम में लोग भूल जाते हैं कि अच्छा टाइम भी होगा, और अच्छे टाइम में लोग भूल जाते हैं कि बुरा टाइम भी होगा. And this is how human beings behave. When I told you about last 41 years, आपको लगता होगा last 41 years has been very easy for Indian stock market. Sensex के लिए बहुत easy होगा. Honestly, कुछ भी easy नहीं था. And let me tell you what all complexity you had in last 41 years. We had two prime ministers which got assassinated: Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. In 1991, our economy was almost on a collapse. हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा because we didn't had dollars for import, and that's when our economy got opened by privatization, globalization, and how things moved up. We had 3 prime ministers and 3 times where we had a hung government, and we had third front. अगर आपको याद होगा, VP Singh, Devi Gowda, I.K. Gujral. We also had a problem of Mandal Commission. We had 2 wars which took place, a Kargil war which took place, and then we saw a China problem which also recently took place. We saw 2000 global financial .com bubble, जिसकी वजह से बहुत बड़ा problem हुआ था, and the whole world got dejected because of that. It was a global problem.
In 1995 there was an Asian crisis which took place. हर्षद मेहता का भी एक बड़ा मार्केट में प्रॉब्लम आई थी जिसका मार्केट करेक्ट हुई थी, फिर केतन पारेख की वजह से भी हुई। फिर हमारे पास 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। एट दैट टाइम ऐसा सही में लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बिकॉज उस टाइम पे दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स, लीमन ब्रदर्स जिसका 150 साल का इतिहास है, AIG जो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, और ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज डिफॉल्ट हो रही थी। इट ऑलमोस्ट फेल्ट एज इफ द वर्ल्ड विल एंड, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, एवरीथिंग विल गेट ओवर, पैसा निकालो और भाग जाओ। देन वी हैड ग्रीक क्राइसिस, एंड देन इंडिया में वी हैड NBFC क्राइसिस जो IL&FS के बाद शुरू हुआ। सो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा कभी भी कोई वक्त नहीं था जब आपको लगे कि सब कुछ सही है। ओके, दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। इसको रीसेंसी बायस बोलते हैं। वी गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट वी फॉरगेट। मैं आपसे पूछूं कल मार्केट क्या थी, आपको याद नहीं होगा, बिकॉज उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आज आप भूल गए। वी टेंड टू फॉरगेट, वी हैव वेरी शॉर्ट मेमोरीज। एंड सर, ऑल द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट पेंडेमिक, ट्रस्ट मी सर, 3 साल बाद जब पेंडेमिक, या इनफैक्ट पेंडेमिक तो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, बट 3 साल बाद जब आप सोचोगे उसके बारे में, ट्रस्ट मी, आप उस टाइम की उलझनों में इतने उलझे होंगे, आपको याद भी नहीं होगा कि उस टाइम पे एक टाइम पे पेंडेमिक हुआ भी करता था। We have very, very short memories. That's how nature has designed us. That's why to create wealth in money, especially in investments, all you have to do is do nothing. In fact, there is a lot of studies which talk about कि आपको पैसा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे स्टॉक्स लेके कुछ नहीं करना, बस, और कुछ नहीं करोगे तभी पैसा बनेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन्ड because we are addicted to information and that's why we make blunders. देखो 90% टाइम आपको कुछ नहीं करना, it's only 10% of the time when markets are in bubble or very expensive, that's when you have to be cautious and you have to be very aggressive, and those 10% टाइम जब मार्केट बहुत चीप होती है तब पैसा ज्यादा लगा दो। 90% टाइम आइडियली पैसे को बढ़ने दो। The question was, are we in the bubble right now? I'll tell you the characteristics of bubble. बबल के टाइम जनरली स्टॉक्स डबल हो रहे होते हैं। बबल के टाइम आइडली कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पीक पे होता है। आज कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बहुत नॉर्मल चल रहा है, हायरिंग, जॉब्स, इकोनॉमी बहुत फास्ट पे चल रही होती है, सब जगह तेजी की बात चल रही होती है, और सब कुछ ऑन इवन लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप्स। टुडे वी आर सीइंग सम IPOs डूइंग वेल, बट दोस आर वेरी स्मॉल IPOs, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट वो बड़े हो रहे हैं। नो बिग लार्ज कैप IPO is coming and it's doubling. So there is not even a single sign of a bubble. But if you ask me that can market correct by 10, 15, 20% at any given point of time, वो मैंने आपको शुरू में चार्ट दिखाया कि हर साल मार्केट 15-20% गिरती है, वो तो नेचर है इक्विटी मार्केट का। You have to accept that कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है इक्विटी मार्केट को, that's the nature of equity market. So if you are able to accept that nature of equity market, you will create wealth from a long term perspective. बिल्कुल। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन है। अमित, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता कि क्या किस पोर्शन को इन्वेस्ट करना है। अगर मेरी सैलरी सपोज 50,000 है, सो व्हाट शुड बी द अमाउंट शुड आई कीप फॉर माई सेल्फ, अपने खर्चों के लिए कितना अमाउंट रखना है और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। कई बार हम गलतियां भी करते हैं, इसलिए पूरा पैसा ही स्टॉक में लगा देते हैं किसी के कहने पे या कोई टिप पे। तो वो एक स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करनी चाहिए? Sure. See, first of all, most important thing, in fact, if you put this question to your 10-year-old child, he can give you the answer because बहुत simple basic maths है। बहुत simple steps हैं of personal finance. We love to complicate it. First, start with your goals. What is your goal? I'll give you a very simple example. And this is, in fact, it might sound simple, but even I made a mistake. 2006 में जब मार्केट बहुत अच्छा कर रही थी ना, मैंने अपना सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया। मेरी शादी 2009 में थी। Ideally, if I have a short-term goal, I should not put money in equity market. But since I was very sure markets are doing well, I made a blunder of putting money in equity market. My value came down, and that time I realized I made a blunder. Goal के हिसाब से invest करना चाहिए, and that's how people learn from their mistakes. Defining your goals are very important. Define your short-term goals, define your medium-term goals, define your long-term goals. And I'll give you my example. I'm around 40 years old. मेरा long-term goal है कि मुझे retirement के लिए save करना है. Because we'll have long retirements. My second long-term goal is मुझे अपने बच्चे की higher education के लिए save करना है. That's my long-term goal. My medium-term goal after 6 years is मेरे को अपनी कार को change करना होगा. और मेरा short-term goal है कि मुझे अपने बच्चे की फीस annually भरनी है. और अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है तो मुझे थोड़ा घूमने भी जाना है. Short-term goal, medium-term goal, long-term goal defined.
Predominantly for my long-term goal, I have more of equity. For my short-term goal, I have got debt in my portfolio, and medium-term goal also I have got debt in my portfolio. And I also have a good amount of cash in my portfolio because life में uncertainty होती है. This is for my emergency. And I have around 10 to 15% of my money into gold also. This is how I have built up my portfolio. By nature, I'm slightly conservative because जब market ऊपर नीचे जाती है तो मुझे थोड़ा फर्क पड़ता है. That's why I don't have 100% in equity. I have 60% in equity, 30% in fixed income, and 10% into gold. आप पूछोगे कि आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी में क्यों नहीं रखते पूरा? बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. जब मार्केट ज्यादा करेक्ट होती है आई कांट टेक दैट, इसलिए मुझे कुशन चाहिए होता है 30% डेट का एंड 10% व्हेन आई से गोल्ड. वी ऑल नो गोल्ड इज अ गुड हेज फॉर अनसर्टेनिटी. जब अनसर्टेनिटी आती है गोल्ड अच्छा करता है, ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका रिस्क मैनेज कर लेता है. सो डिफाइनिंग योर गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव सीन जनरली पीपल डोंट डिफाइन देयर गोल्स. आज काफी लोग हैं जो सिर्फ स्टॉक खरीदते हैं और गोल डिफाइन नहीं करते. दैट्स वेरी रॉन्ग. डिफाइन योर गोल्स एंड देन डू इट. सेकंड पॉइंट आई टोल्ड यू, businesses create wealth, but this doesn't mean that all businesses create wealth. Your core portfolio should be large cap, then followed by mid cap, then followed by small cap. Generally देखा गया है तेजी में लोग लार्ज कैप को भूल जाते हैं, मिड कैप को भूल जाते हैं और स्मॉल कैप में घुस जाते हैं. Your core portfolio always has to be large cap, good blue chip companies from a long term perspective. Okay, this is fundamental. Asset allocation is fundamental. Having a core portfolio of large cap, then mid cap and small cap is fundamental. Don't put all your money into one stock or one sector. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. इंदु, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? श्योर. इंदु, अगर 2008 में अगर आपको मैं बोलता कि पूरी की पूरी दुनिया मोबाइल फोन पे चली जाएगी, राइट फ्रॉम वॉचिंग अ मूवी to social media to buying Amazon to everything possible, even sessions भी technology पे होंगे. I'm sure Indu you would have bought all technology stocks because सब कुछ technology पे हो रहा है. हम दिन में 2 से 3 GB डेटा यूज करने वाले हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे होगा. अगर देखो स्टोरी प्लेड आउट today, our lives are completely with technology and we are consuming at least 2 to 3 GB data on a daily basis. But अगर आप telecom stocks को देखोगे, none of the telecom stocks have made money. In fact, most of telecom stocks have actually destroyed wealth. That's what I'm trying to say. Diversify your money. Have pharma, have into banking, have into financials, have into telecom, have into IT. When you diversify your portfolio, you are managing the risk because you don't have a sector-specific risk, you don't have a stock-specific risk. So when you are building a portfolio, diversify, understand your goals, understand your risk, and based on that, you have to define your goals. See, when somebody says na कि मुझे stock में डाल दे, you don't know what his time horizon is. So I'll give you a simple example. If I say how is Bajaj Finance as a stock, which I'm holding from last 10 years, अगर कोई बोलता है कि ये stock को बेच दो, वो शायद 5 दिन के हिसाब से बात कर रहा है, but मेरा horizon 10-20 साल का है, तो मुझे मैटर नहीं करता. So you have to understand जो सामने वाला बात कर रहा है वो किस horizon के लिए बात कर रहा है और आप किस horizon के लिए stocks को लेके बैठे हो या किस horizon के लिए आप mutual funds को लेके बैठे हो. If you are doing a SIP, honestly today's session is not relevant only for you because आप तो 25 साल की SIP कर रहे हो. 25 साल की SIP के लिए आज मार्केट में क्या हो रहा है उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके गोल्स तो 20 साल बाद हैं. So you have to understand what is your goals and how are you planning it. Today's session was predominantly for those investors who are asking कि क्या मार्केट टॉप में है, क्या हमको पैसा निकाल लेना चाहिए अगर टॉप में है, या पैसा अगर मुझे फ्रेश मनी डालना है तो क्या मुझे नहीं डालना चाहिए. My idea was today neither we are cheap, neither we are very expensive, we are moderate in equity. So if you are putting money, understand आप यहाँ से सोच रहे हो कि मार्केट बहुत फास्ट मूव होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी. और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम बबल में हैं और मार्केट बहुत जबरदस्त करेक्शन हो जाएगा, वो भी आइडली नहीं होगा. वी आर एट मॉडरेट वैल्यूएशन एंड यहाँ से पैसा मॉडरेटली बनना चाहिए. अमित, तो इसमें एक और क्वेश्चन ये भी है कि जो हमारे व्यूअर ने पूछा है कि बेसिकली हम सारे सर्कमस्टेंसेस देखते हैं, बट इजंट इट आल्सो इम्पोर्टेंट टू गेट द फेयर वैल्यू ऑफ अ कंपनी. हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं हम उसकी फेयर वैल्यू को पहले समझें और उसके बाद ही उसमें निवेश करें. Absolutely. See, majority लोग सिर्फ प्राइस को देखते हैं and Warren Buffett says very interestingly, we know the price of everything but we don't know the value of anything. और प्राइस आज पता करना कोई बड़ी बात नहीं है. आज तो हर एक ऐप, हर एक प्लेटफॉर्म आपको प्राइस दे देगा. वैल्यू इज समथिंग जो आपको फाइंड करनी पड़ती है. एंड वैल्यूएशन बेसिकली कैलकुलेशन पे होती है. अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो. कि कंपनी को बेसिकली वैल्यू कैसे करते हो,
वो आने वाले वक्त में कितने प्रॉफिट्स बनाता है उसके बेसिस पे आप उसको वैल्यू करते हो। ओके ओके, ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी ऐसे ही होती है। अगर आपको किसी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कितना अर्न करता है उसको आप डिस्काउंट करते हो, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। सो दैट्स हाउ यू डू वैल्यूएशन। बट इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं होता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल बेस्ड ऑन assumptions. Just as an example, when I say a Hindustan lever or a HDFC or ICICI, माई डिस्काउंटिंग कि वो आने वाले 10-15 साल में कितना कैश फ्लो जनरेट करेगा, इसमें साइंस इन्वॉल्व है। बिकॉज आप पास्ट को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, बट यू हैव टू ऑल्सो इमेजिन, आपकी बहुत सारी अजम्पशंस होती हैं कि इकोनॉमी इस तरह ग्रो होगी, रिटेल बैंकिंग इस तरह ग्रो होगी, थिंग्स ऐसा होगा, कॉम्पिटिशन ऐसा होगा। देयर लॉट ऑफ अजम्पशंस, एंड वी ऑल नो कि वर्ल्ड इज ऑलवेज अनसर्टन। There might be suddenly a new fintech player who comes in who disrupts a lot of stuff. So आपकी जो कैलकुलेशन होती है, ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि इसका आंसर वैल्यूएशन का यही होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट assumption, एंड दैट्स व्हाई हर एक के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। बट इफ यू यूज सम कॉमन सेंस, you might be a little bit here and there, but you should not be completely wrong. So why we do valuation, or why one should do valuation by buying anything, is because even if he's little bit here and there, he's approximately right, he will make money. He doesn't have to be completely wrong. That's where you lose money. अमित, हमने एक और ट्रेंड देखा है, वी हैव सीन लास्ट ईयर ऑल्सो, जब पैंडेमिक आया इन मार्च में ही हमने देखा कि काफी सारे यंगस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में एंट्री की और अपने डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं। सेम पैटर्न, सेम ट्रेंड हम इस वक्त भी देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में। सो वन एडवाइस यू शुड दैट इन्वेस्टर्स शुड फॉलो कि आखिर एग्जैक्टली मार्केट में एंट्री करते वक्त करना क्या है, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ देम आर क्लूलेस। उन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, बट दे डोंट नो कि अब आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे मार्केट को फॉलो Perfect. करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपसे जानना चाहती हूँ। I might give you a little interesting answer. If you are sitting bored, आप क्या करोगे? अभी समझो आपको बोर, अब थोड़े बोर हो गए, आप क्या करोगे? समझो ये sitting है, एक्चुअली अगर मुझे पता चले कि यू नो आप थोड़ा बोर हो रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप मोबाइल उठाओगे, आप थोड़ा सा कुछ मोबाइल पे मोबाइल ट्विटर पे देख लोगे, या फेसबुक या इंस्टाग्राम। ओके, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. What is happening is, and this is not an Indian phenomenon, it's a global phenomenon. See, investment is not to kill your boredom. ठीक है, जब आप ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप गोल्स के लिए कर रहे हो, ओके, एंड इट्स नॉट ऑल्सो फॉर एंटरटेनमेंट। ये पैसा हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको एंटरटेनमेंट की कुछ चीजें करनी है, डू इट, but let not your personal wealth be for entertainment, because there is a family dependent on you, it's your goals, it's your hard earned money. So you have to take it very professionally, okay, and you have to manage very logically. If you are investing, treat it with lot of research first. आप जो खरीद रहे हो, ऐसा नहीं कि खरीदने के बाद सोचो मैंने क्या खरीदा, पहले रिसर्च करो, सोचो उसके बारे में, सोच समझ के क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें इन्वेस्ट करो, and that's how, and stick to the plan, and also write down कि आपने इन्वेस्टमेंट किस पर्पस के लिए की थी। Okay, the idea is very simple. Don't invest to kill your boredom or for entertainment. If you're buying stocks, buy them directly. Besides stocks, also buy equity mutual funds. Have a combination of stocks, have a combination of equity mutual funds. Have a discipline, have a process. इसके बिना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और किसी के सुनने पे इन्वेस्ट मत करो, अपना दिमाग खुद लगाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था हर्ड मेंटालिटी का। जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए वो सही होगा। ओके, उनके गोल्स में भी अलग हो सकते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ माई कलीग इज 80% इक्विटी, मे बी उसके गोल्स अलग है, उसके हालात अलग है, उसकी सर्कमस्टेंस अलग है, उसकी सैलरी अलग है, और मे बी उसका रिस्क एपेटाइट अलग है। I have to look at my goals and my risk appetite, because at the end of the day, I'm answerable to my family, and that's how you have to think, and you take personal finance very seriously, and with a very process point of view. Don't treat it like entertainment. अमित, आई एम श्योर कि लोगों को ये बात समझ में आई होगी जो व्यूअर्स से बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आप देखेंगे कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनकी तरफ से ये क्वेश्चन हमारे सेशन में हर बार आ रहा है कि आखिर एग्जैक्टली अब हमें करना क्या है, व्हाट शुड वी डू नाउ। एंड इसमें सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर एक रेस हो रहा है कि कई बार लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, या फिर गलत पोजीशंस ले रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं। तो उनके लिए हमारी तरफ से यही एडवाइस है कि
आप म्यूचुअल फंड के साथ शुरुआत करें। आप इक्विटी म्यूचुअल, अगर आप इक्विटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप फिर भी डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर चलिए। आप छोटे मोटे कॉल्स और जो कंपनीज जो वर्थ नहीं है उनमें निवेश करने से बचिए। तो आई एम श्योर लोगों को समझ में आ रही होगी ये बात और वो अपना डिसीजन सोच समझ कर लेंगे। इंदु, सो देर इज नथिंग बेटर देन, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो और अगर आपको इक्विटी की समझ कम है, जो आस्ते आस्ते बनती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड से बेटर तरीका दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिकॉज इट इज लाइक कोई आपके लिए काम कर रहा है 24 घंटा। हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है, इट ऑलवेज आउटसोर्स इट टू द एक्सपर्ट्स। देर इज अ फंड मैनेजर, देर इज अ टीम ऑफ पीपल, एंड आई शोड यू द रिटर्न्स ऑफ डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड. यस, Since it's their core job, since it's their core job, they will manage it in a far better fashion. Especially if you're doing SIPs. SIPs से better magical product कोई भी नहीं है. We human beings are generally very lazy. हमसे हर महीने सेविंग नहीं होती है. SIPs आपसे फोर्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करता है. और मैं कहूंगा अगर आप अर्न करते हो इन अ सर्विस सेक्टर, हफ्ते इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ अपनी SIP को जाने दो. बिकॉज जैसे ही पैसा निकल जाएगा, यू नो रिमेनिंग मनी आई हैव टू एंजॉय. इट्स अ फोर्स्ड वे ऑफ सेविंग. I can just vouch by with my example. I've been doing SIP from last 14 years, and I've been, मुझसे अगर पूछे ना SIP के अलावा और कुछ चीज अवेलेबल होती है ना, मुझे SIP से कुछ चीज सिंपल दिखती है दुनिया में, and honestly उससे ज्यादा कुछ सिंपल होगी भी नहीं. So you have to create wealth. SIP is the most important magical formula, and stay for as long as possible. So people generally ask a very simple question: कितना इन्वेस्ट करूं और कितना लंबा इन्वेस्ट करूं? I have a very one line answer. जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो, और जितना लंबा इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो. थिंक ऑफ 10 years, 20 years, 30 years. That's how you'll create wealth. And maybe as much as you can save, that's how you create wealth. That's the magic principle in terms of how you create wealth. बिल्कुल। अमित, एक क्वेश्चन ही आ गया है एसआईपी से रिलेटेड एंड आई वांट टू टेक दिस क्वेश्चन। राहुल का क्वेश्चन है कि मैं 3000 पर मंथ एसआईपी करना चाहता हूँ। सो आई वुड से तो व्हाट शुड बी द वे, लाइक एग्जैक्टली उन्होंने पूछा है कि मैं 3000 रुपए हर महीने एसआईपी में निवेश करना चाहता हूँ। ओके, तो किस तरह से इनको शुरुआत करनी चाहिए, और इनके गोल्स तो हमें नहीं पता है और ये किस तरह के इन्वेस्टर हैं वो भी हमें नहीं That's पता a है। problem. Yeah. या तो लेकिन एक्चुअली जिस तरह से गोल सवाल है गोल पता इनका, होना बहुत इंपॉर्टेंट है. गोल पता बहुत करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंदु अगर वो अपनी शादी के लिए जोड़ रहा है, अगर 2 साल के बाद है, तो मैं इसको इक्विटी रिकमेंड नहीं करूंगा. मैं कहूंगा SIP डेट फंड में कर ले, बिकॉज दैट विल हेल्प हिम गेट सम मनी. बट लेट्स से इफ ही इज थिंकिंग फॉर मे बी रिटायरमेंट और वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम अ 10, 15, 20 ईयर पर्सपेक्टिव, देन आई वुड रिकमेंड हिम अ DSP फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों है. और वो डाल के आज 3000 से शुरू करें, कोई बात नहीं. मैंने भी अपनी पहली SIP 2500 से शुरू की थी. And then over a period of time, your SIP amounts increases. So आज 3000 से कर रहा है, कल 5 करेगा, फिर 15 करेगा, फिर 20 करेगा, फिर 50 करेगा, फिर 1 लाख से करेगा, फिर 2 लाख की SIP भी करेगा. So as your income increases, you will increase your SIP amount. If your objective is long term, SIP is a very good way of building discipline. Amount छोटा नहीं होता. ये जो आज 3000 रुपए की SIP कर रहे हो ना, वो 10 साल बाद वो लैक्स में बन जाएगा. That's power of compounding. ये simple maths है. Okay, and use any calculator, it will explain you. 3000 की SIP ये lakhs में convert हो जाती है. So start with 3000 if your income is low, no problem, nothing to feel good or bad about it, but keep on increasing this SIP amount as salary increases. और डाल के बस भूलते जाओ, and trust me, you'll create wealth and nothing can stop you in between. बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि राहुल को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और अब आसानी से वो अपने एसआईपी की शुरुआत भी कर सकते हैं। अमित, थैंक्स अ लॉट, इतनी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की और इतने सारे क्वेश्चंस की रिप्लाई किया आपने। और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन व्यूअर्स ने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे थे उन्हें मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आपके इन स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जवाब हम यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप तक पहुंचा देंगे। तो आपके पास अगर और भी क्वेरीज हैं स्टॉक्स रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के लिंक में ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। Sure. अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thanks to Indu, and thanks to all the participants for logging in, and thanks Indu for giving the opportunity. थैंक यू। ओके, बाय बाय व्यूअर्स। Thank you.